We're on? Yeah. 3, 2, 1, and we are started. So, Deep Bhai, thank you so much for doing this. Most welcome. Always pleasure to share a screen with you, man. I'm so glad you guys have invited me for your this podcast thing you have started. Wishing you all the best for. थैंक यू सो मच भाई, कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो गया आप, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यही तो नहीं चाहिए अपने को फॉर्मल होने के लिए यार। आगे का जो भी था वो सीरियस मत लेना। वो मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है यार। So what's happening? What's going on right now? Nothing. I'm meeting you after 3 years. 3 साल के बाद तो अपन मिल रहे हैं। हाँ यार, बीच में लॉकडाउन आ गया था, हमारी चाय पे चर्चा ही रह गई। फिर उसके बाद फिर बात नहीं हुई अपनी। नहीं यार, हमारी बात साल के बाद अपन फिर से मिल रहे हैं। या एंड कहाँ मिल रहे, कैसे मिल रहे, देखो सीधा अच्छा, ऑन कैमरा सीधा जाएगा अब YouTube में ये पूरी बकचोदी हमारी। करवा लो बेइज्जती अब। नहीं यार, बेइज्जती की बात ही नहीं यार। I'm actually ना, मैं आपको सही में बताऊँ ना तो I really wanted to start off something of this sort, where I can invite all my friends, especially all my artistic friends, है ना, फोटोग्राफर्स। आप लोगों की बातें तो इंस्टाग्राम में तो सुनने को मिलती नहीं है। अब यहाँ पर मिलके बैठेंगे, बात करेंगे तो प्रॉब्ली you might share something which is more knowledgeable for people out there. Exactly. So how did you come here? What exactly happened with you during the COVID? So you were stuck at home. So what did you do? You got famous sitting at home. क्या किया? For COVID, there are very less people know about that. I shifted to Mumbai just before COVID. Okay. It's like हम भी शिफ्ट हुआ, मैंने सोचा कि हाँ भाई अभी लाइफ सेट है, मज़ा आने वाला है। 2 दिन बाद पता चला कोरोना स्टार्ट हो गया। तो जस्ट इमेजिन आई जस्ट शिफ्टेड टू सम न्यू प्लेस एंड वी आर जस्ट सो हैप्पी दैट ओके चलो अभी काम स्टार्ट हो जाएगा, वी आर गोना गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद द पीपल. Then suddenly this COVID thing started, so we were all stuck. But yeah, I can say that I really enjoyed COVID time. Not all, we are just eating every day all the healthy food, every junk, and we were watching so many shows, Netflix, anything. We did everything. मतलब हमारे लिए होता क्या था कि बस सुबह उठो, नाश्ता करो, फिर कुछ देखो टीवी पे, तब तक खाने का टाइम हो जाता था, लंच का, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर वापस उठो, चाय पियो, फिर शाम को कुछ नहीं टेरेस पे चले जाओ, घूमो फिरो, फिर तब तक रात हो जाती थी. देन डिनर का टाइम, तो डिनर करके फिर से वापस कुछ 2, 3, 4 बजे तक देखो कुछ ना कुछ मतलब पूरा अमेज़न ख़त्म कर दिया था, नेटफ्लिक्स पे कुछ बाकी नहीं था. बाकी जो कुछ चीज़ें नई मिली, हॉटस्टार है, मूवी टीवी वी डिस्कवर्ड, यू नो, लाइक ये तो कमर्शियल हम लोग देखते रहते कि अच्छे काम दिखते हैं अमेज़न नेटफ्लिक्स पे, बट मूवी इज़ अ रियली आर्टिस्टिक साइड वेयर यू कैन सी पूरे दुनिया के ना जो आर्टिस्टिक लोग, लाइक यू नेम द ब्रिलियंट डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर्स, उनका जस्ट बस हम लोग ने नाम सुना है, काम नहीं देखना पड़ता. तो वो फिल्में उधर है. पूरा कुछ कमर्शलाइज नहीं है. यू सी कि ऐसा शेकी शॉट्स है, मतलब पता नहीं कहाँ ऐसे ही जंगलों में शूट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं. एंड that I found that our website has something really good content, worldwide content over there, which you can watch it, you can get inspired for your shoots or anything. So yeah, that was the movie was a good, yeah, it was amazing, good channel for you. Yeah, it was good मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया मूवी, हमेशा देखता रहता हूँ. मेरे को लगता है कि कुछ अच्छी मूवीज हैं, पर कभी यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब यार इनको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर घुस जाते हैं. या एंड ब्रिंज वॉचिंग होती है ना, फिर वो बहुत गंदी हो जाती है यार, फिर अब निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रिंज वॉच से. तो फिर इसलिए मैं आजकल डरता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स को खोलने में डरता हूँ आज के डेट में. कुछ देखना शुरू कर दिया तो फिर बंद नहीं होगा. वो थोड़ा वो जो मायाजाल बना के रखा हुआ है ना नेटफ्लिक्स में, तब तक जब तक आप खत्म ना करो तब तक ना आपको सांस चैन नहीं पड़ता, सांसें नहीं ले सकते. तो बट यू नो इट्स अप टू अस कि लाइक कितना हमको देखना है दिन में. तो राइट नाउ आई एम वाचिंग सम वेब सीरीज और समथिंग, सो आई हैव पर्टिकुलर टाइम कि अच्छा मेरे को इतने से इतने टाइम में ही देखना है. तो यू नो वो आपका हैबिट होता है ना, तो इवेंचुअली यू एंड अप नॉट वॉचिंग मोर देन
particular time. Of course. That's So that habit is important. And yes, this movie thing is भाई आपको 50s की मूवी मिलती है, 60s की मूवीज मिलती है, मतलब क्या क्या शूट करते थे लोग भाई, इतना मतलब कंटेंट कहाँ से लाते थे. सही बात है. That's good. Yeah. Very nice. ओके काफी मूवी की बात हो गई, आज प्रमोशन में कर दिया मूवी का, प्राइम का, नेटफ्लिक्स का. बॉस यू ऑल शुड पे अस मैन. बट एनीवेज ठीक है यार, दैट्स गुड. बट क्या बोलते हैं, आई वाज फॉलोइंग यू, I started following you when we met, right? Yeah. I think we met through Gaurav. Yeah, our good-hearted big friend. Big friend. Gaurav Arora. Gaurav. That's what we call him. Gaurav का branding हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो we met through him and then we started immediately following each other. And then क्या बोलते हैं, but then right after that COVID हो गया. Yeah. और उसके बाद you were stuck in the house for quite some time. But then you were doing a lot of photo shoots. And how did that happen? वो कैसे कहाँ से निकल गया वो idea? So FaceTime thing happened that I was talking to someone over FaceTime. बकचोदिया ही कर रहे थे, मतलब कुछ काम तो होता नहीं था उस टाइम पे. मतलब मेरे पास कौन सा वो फ़ोन था, आईफोन का छोटा सा 6S. सो उसमें ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो आई वाज डूइंग FaceTime एंड वो ना कुछ मुझे डॉट दिखा. ये क्या है, मेरे को टैप करने दो. तो मैंने टैप किया तो वो पिक्चर क्लिक हुए. यार ये तो स्क्रीनशॉट है, बट वी कैन यूज इट दिस एज अ picture, and we can try to work with the people around the world by doing this FaceTime thing. So we I won't say that I introduced, but there are so many people over there. Yeah, there was this one photographer, I think he is a French photographer. उसका नाम मैं भूल चुका हूँ. Very good photographer. I think उन्होंने भी he had also started doing something similar. But then you went crazy. You went all in with that. Maybe I was among 4 or 5 people who started doing the FaceTime thing. So I have seen Shasha Jairam's work. She shot very beautifully with her friends over. Man, I was like, okay, I think this is good idea to work during the lockdown. Do more of this. Yeah. So मैं बोला यार जहाँ जाके क्या जाएगा, जो हम ऑन फील्ड 1-2-3 घंटा डालते हैं तो इधर एक या 1.5 घंटे होता है. एंड क्या होता है कि लॉकडाउन में स्टक होने की वजह से लोग ना वो बेचारे ऐसा होता है यार हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ क्रिएटिव कर नहीं पा रहे. तो उनके लिए भी ना वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती थी कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे. कि दिन में एक आधी घंटा समथिंग वेरी डिफरेंट, 1 घंटा समथिंग वेरी डिफरेंट टू डू. या फॉर देम इट वाज हाफ एन आवर, 1 hour. फॉर मी इट वाज लाइक I have scheduled 5 shoots a day. सुबह 4 बजे भी उठता क्योंकि वो लोकेशन डिफरेंट होता था. इंडोनेशिया में शूट किया, आई शॉट ऑन लंदन, USA, एवरीवेयर. लाइक आई सो कूल टू से. हाँ, इंडिया में बैठे बैठे मैं US में, लंदन में, थाईलैंड में शूट करा. मतलब व्हाट स्वैग था मेरा उस टाइम में. मतलब हाँ. But that also got you what you call published on Vogue, right? Grazia. It got you this thing featured on Grazia also. Yeah. I read that also. I was following you up. तुमको लगता है ना फॉलो नहीं करता हूँ मैं. ध्यान रखता हूँ मैं सारे लोगों का. भाई ब्लेम मत किया करो. So yeah, one day woke up तो क्या ही बोलते हैं, हम लोग उठते ही 10-11 बजे थे. तो I saw one of the editor from Grazia. She was like, we want to feature your work. Tanya, I remember. So I'm so thank you Tanya for giving me the opportunity. So she messaged like she like we really like your work. I was like I will be. Grazia का नाम था. और जो मन में लड्डू फुटते हैं यार, नहीं ऐसा अपन देखना स्टार्ट करते थे. अच्छा ग्राजिया में आएगा, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, मैं फिर भाव खाऊंगा दोस्तों के सामने. सो ये सब चलता रहता था हमें. तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, चलो घर में बैठे हम कुछ नया लोगों को शायद सीखने को मिले. सो दैट्स हाउ दैट हैपेंड. But did that get you famous? That feature on Grazia? Yeah, I got a chance to work with so many people of the industry. Okay. I don't say that I wanted to be a famous. I just wanted to reach out to some people. Right people to show my talent. Of course, makes sense. Yeah, so that happened. That helped me a lot. Yeah. Very nice. Because मैंने ना follow up किया था उस time. I was just checking. Yeah, we were talking that time. Yeah. We were talking also. I think I was messaging you also कि भाई अच्छा है at least कुछ कर रहे हो.
क्योंकि ना मैं आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस फेस टाइम फोटोग्राफी पार्ट. यार मैंने ना एक बार ट्राई किया और मैं सॉलिड बोर हो गया. मैं अनशंड बोर हो गया. एंड आई वाज शूटिंग विद अ वेरी गुड मॉडल ओनली. ऐसा नहीं कि नहीं, पर मैं अनशंड बोर हो गया. मेरे को लगा कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा है. आई थिंक यू आल्सो हैव टू बी इन दैट जोन. I was not in that zone. During that time, I was in the zone of cooking food, working out, and cooking food, and again working out. I was in that different zone altogether. So I tried shooting, and then मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार सब मैंने तुमको ही करनी है. मेरे से हो नहीं रहा था. वही होता था. And उसके लिए मेरे को enthusiasm भी नहीं आता. Like how you were getting excited to work in London or America or Japan or any other country, or working with different what do you call models. With me, I did not even try to figure it out, and then मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं मेरे लिए नहीं हो पाएगा. मे बी यू हैव टू बी इन द जोन ऑल्सो. बट आई सॉ योर थिंग मैन एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड. मतलब मेरे को लगा कि यार बंदा कर रहा है कुछ. एंड इट वाज गुड टू सी दैट कि यू आर गेटिंग सो मच रीच आउट ऑफ दैट. एंड अगेन देन magazines like Grazia is big deal, right? And they coming from their own side to feature you on this term, it is something very interesting. You know, so that's good. But ever since then, अभी कैसा चल रहा है? अभी काम क्या चल रहा है? What's going on? Anything exciting? Yeah, science lockdown over. There are so many opportunities started. Then I'm quite enjoying. जो फाइनली भी जो मेरा सपना था कि बॉम्बे में मेरा घर हो, अकेला रहूं, बीच के पास रहूं, मेरा बिल्ला. अच्छा बिल्ला बोलो. पाब्लो मेरे बिल्ली का नाम. ओके. सो मैं मेरे बिल्ली के साथ मस्त ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ. आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट. आई एम डूइंग माई फेवरेट वर्क विथ माई फेवरेट पीपल. जिनके साथ काम नहीं करना उनको भी हाई बोलता हूँ. खुश रहता हूँ. Basically, I'm happy. You're happy. That's very good. Yeah. And commercially, what's going on? मतलब money wise, set एकदम life. Yeah. So now. बॉम्बे में रहना मुश्किल है. तो ये पूछना जरूरी है कि पैसे वैसे सब मतलब कमाई सब अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है. आज तुम्हारा भाई ना ऐसा स्टाइलिश कपड़ों में बैठा है तो that's the answer of your question. Sorry, I'm just joking. Yeah, commercial. That's important. That's very important. Yeah, the answer is very important. Please go ahead. Give me the right answer for this. What's going on? Commercially, I won't say that I'm earning so much. Okay. But I'm earning that much that I can be happy in that. Okay. I can buy something what I want. वो 1-2 महीना लग जाता है. But yeah, patience रखना पड़ता है. But yeah, eventually I'm happy over here. I'm working, again working, and yeah, commercially I think I'm stable after a few months. I faced difficulties when I just shifted because I used to stay in hostel. Then I had no more commercial projects. So every day I have to count कि अच्छा चलो आज ये हॉस्टल का इतना एक दिन का 600 या 800 रुपया है. ओके मुझे ये शूट में अगर शायद वहाँ पर टिफिन सेंटर में खाने का पैसा अलग से. आई रिमेंबर टिफिन सेंटर. याद है मेरे को. बताओ उसके बारे में बताओ. पूरा कंप्लीट करो. कौन सा? वो टिफिन सेंटर में जो खाना खाते थे. मैं और जानी. हाँ तुम और जानी. बकचोद इंसान है जानी. मेरे को टिफिन सेंटर खेल ले जाता था टिफिन का खाना खिलाने. बट यार सो या तो मैं वो सब कैलकुलेट करता था. चलो 800 रुपया रूम का है एक दिन का. वो खाना चलो तो मैं कभी ऐसे दिन निकाल लिए कि मैंने लंच में वड़ा पाव खाए, चाय और समोसा पाव खा लिया. मतलब कि चलो डिनर हम कुछ अच्छा खाएं. उस टाइम पे तो पता नहीं मैं उधर एक दोस्त था तो उन्होंने मेरे को एक जगह दिखाई थी. ऐसा ढाबा स्टाइल था. तो भाई इतनी छोटी सी दुकान है भाई. भीड़ लगी हुई है. 50 लोग अंदर बैठे हुए, 50 लोग बाहर बैठे. और भाई खाना क्या स्वाद. क्या बात. और कितने का 35-40 रुपए की थाली मिलती थी. और फुल मतलब तुम खाना वेज नॉन वेज तुमको जो खाना है खाओ. तो मैंने बोला ये सही चीज़ है यार. मतलब चलो हमारा रात का तो सीन सेट है. रही बात सुबह की तो हो जाता था. इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निकल ही जाता था. तो यार ऐसे थोड़ा 1-2-3 महीना ऐसा मैंने निकाला. देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड बिकम स्टेबल. अच्छा आई स्टार्टेड गेटिंग माय वर्क. देन I got a daring to shift with people to get a flat and now I stay alone. I have some experience with people, so I mean yeah, it's better to stay alone in Mumbai rather than depending on someone. Very true. Don't depend on someone.
very true. बहुत मुश्किल हो जाता है साथ में रहना, especially when you're a photographer. Yeah. It is very difficult to stay with people. People have different mindset about photographer कि अच्छा ये तो लेट तक काम करता है, अरे यार इसका तो ये लड़के इतनी सारी लड़कियों के साथ काम हो, इतनी सारी लड़कियाँ आती, वो अंकल्स रहते हैं ना आपकी सोसाइटी में अंकल आंटियाँ, वो सीसीटीवी बन के बैठे रहते हैं, अच्छा इसके घर में ये आ रहा है, इसके घर में ये, अच्छा ये इतने घर में आप क्या कर रहे हो भाई कुछ नहीं यार चाय बना के पी रहा हूँ, हाँ चाय से ज़्यादा चाय थोड़ा बनाते चाय लगाते हैं पतीला में लाते हैं तो या so this all the difficulties I think every photographer is facing right now, unless you are a 40-50 year old photographer and married. I mean क्या बोलते हैं, at least Bombay is much better than any other city. Yeah. है ना, काफ़ी लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है ऐसे, मेरे को इस मामले में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मॉडल्स कमिंग एट होम, मतलब हर दिन ही अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइलिस्ट, तो मैंने तो अपने घर पे पूरा स्टूडियो सेटअप भी बना के रखा है, तो दैट मींस आई हैव नेवर हैड दैट इशू कि कोई आके मेरे को कुछ बोल के गया, बट या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि कुछ लोग होते हैं जो सीसीटीवी कैमरा बन जाते हैं इन फोटोग्राफर्स लाइफ, राइट, एंड दैट बिकम्स अ बिग इशू. So I'll share you my friends who stays in my building. तो वो बेचारा यार सीधा साधा बंदा है, तो उसके ना ऐसे पूरी क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं ना उसको, विंडो, बड़ी सी विंडो है, तो उसकी एग्जैक्ट पैरेलली ऐसा साइड में एक बंदा रहता था, तो ही यूज्ड टू वॉच ओवर, लाइट बंद करके वो उसको देखता है इसके घर में, तो वो ये देखता था कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो वो बेचारा सीधा साधा बंदा है, वो शूट करता था, लड़कियां बैठती थी तो बातें करते थे, तो बोले किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे एक दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, इज माय वेरी डियर फ्रेंड. नाम नहीं लेना है अपने को बस. क्यों भाई, वो उसकी बेइज्जती हो जाएगी. तो वो बेचारा बोला कि यार, तो उसको वो कंप्लेन करने लगा कि तुम्हारे घर में इतनी सारी लड़कियां आती है, तो यू शुड मीट पीपल इन गार्डन. मतलब भाई घर लिया है तो घर में मिलेगा, गार्डन में मिले यार. तो वो बोले कि वही सब कि हमारे घर में बच्ची है, ये है वो है, तो वो बेचारे को थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था. सो या आई मीन दिस वाज द थिंग. होता है, मुश्किल तो होता है, बट चलो ठीक है, that's something which we can't help it. Exactly, we can't change people's mind. We can't change people's mind, and also at times, I mean, you have to face such issues. You can't. Yeah. Sudeep bhai, चाय तैयार है, चाय आपके हाथ में आ गई है. चाय. It was a small break. This is much. Very good. So while we were making tea, आप मेरे को बता रहे थे about the editing sessions. तो ये एडिटिंग सेशन के क्या हालचाल है जब क्लाइंट के साथ में काम होता है और आपने एडिट कर दिया है वीडियो या फोटो जो भी, अभी तो यू आर डूइंग लॉट ऑफ वीडियो वर्क, लेस ऑफ फोटोग्राफी एंड मोर ऑफ वीडियो, यू हैव कंप्लीटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर ट्रांजिशनिंग टू video part, right? And direction, or only video, cinematography. What exactly is happening at this point? I'm still confused. Okay, so I love to shoot commercials. उसमें वो easy होता है कि they give you the brief, they have their ideas, they have creative directors. So हमारा part ना बहुत easy हो जाता है. So in mostly whatever I have shot a music video, I always come up with a new idea. I want to try something new. This is what I'm thinking. कभी-कभी जाता है, कभी-कभी नहीं जाता. So I was always open for new ideas कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. So yeah, I can say I want to be more into cinematographer or DOP rather than going to a director. नहीं तो भाई सीधा कूदते हैं ना डायरेक्टर बन के, जो नाम छपता है, नाम लगा देते हैं लोग डायरेक्टर की, अच्छा डायरेक्टर बाय दिस, बट लोगों को ये नहीं पता कि भाई डायरेक्टर तुम्हारे पास जब एडिटिंग डीओपी वो बस स्टेप बाय स्टेप के, पहले तुम सिनेमाटोग्राफर, डीओपी जो होता है कि अच्छा वो डायरेक्टर का भी सुनता है, देन ही विजुअलाइज दैट फ्रेम्स एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट, देन ही एक्सप्लेन टू सिनेमाटोग्राफर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिनेमाटोग्राफर एंड डीओपी. डीओपी क्या होता है, वो लाइट वाइट सेट करता है, पूरा मूड क्रिएट करता है, सीन पूरा क्रिएट करता है, स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत वो सेट करता है. एंड सिनेमाटोग्राफर वो है कि जो वो डीओपी का विजुअलाइजेशन है वो उसको फुलफिल करता है कि अच्छा दिस इज हाउ वी शूटिंग, दिस एंगल वी आर शूटिंग, दिस लेंसेज वी आर टेकिंग, सो दिस इज हाउ द सिनेमाटोग्राफर वर्क्स. या
एंड डीओपी का काम है कि अच्छा ही विल सजेस्ट यू कि अच्छा दिस इज अ नाइस लोकेशन, दिस इज अ नाइस lighting we should try, this is a field we can try for. So that is a explanation of a director's vision. So director, DOP, cinematographer. So I have done my work as a cinematographer. Okay. Still I'm trying, but I can't say that I'm a good cinematographer or a good DOP, but still I'm struggling. Direction, yeah. So whatever you have seen my videos on reel, so mostly मेरा आइडिया होता है कि अच्छा इफ आई विजुअलाइज समथिंग टू अ पर्सन, इफ समथिंग आई सॉ सम मूवीज और समथिंग व्हाटएवर आई हैव सीन, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा मैं किन लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किन लोगों के साथ विजुअली मैं ऐसा कुछ ट्राई कर सकता हूँ. एंड यू नो इट्स अ टच वुड, whoever I have worked, they were always excited and enthused for my creation. Your creativity. Yeah, so that's very important. If glad. they are excited about your creativity, तो फिर आप कुछ भी बना लो. Yeah, and moreover they trust my vision कि अच्छा ये बंदा ये कुछ ना कुछ अच्छा निकालेगा. So I won't hesitate to say few names. So what I shot some लोगों को ऐसा लग रहा है for photographers or cinematographers only they shoot girls nicely. So I have shot with one of my dear friends, Sankalp Joshi. Okay. If you have seen, we shot on beach. उसमें वो पूरा शाहरुख खान वाला फील दिया है. हाँ यहाँ कदम कदम पे देखा मैंने वो फोटो. So there was our first shoot. उन्होंने बोला कि भाई कुछ करते हैं. बोला भाई कुछ करते हैं. तो यही चला, भाई कुछ करते हैं, भाई कुछ करते हैं. बट क्या करते हैं आइडिया नहीं है. हाँ. तो एक दिन ही कॉल में भाई रियली गुड आउटफिट. बोला भाई आ जाओ. तो 4 बजे मैंने उसको घर पे बोला, मैं घर पे आओ बैठते हैं. तो बकचोदियाँ चल रही है हमारी. भाई बोले भाई क्या कर रहे हैं. मैं भाई सोचता हूँ अभी. 4:30 तक प्लानिंग नहीं है. सही है. 4:30 तक बैठे, हमने कॉफी पिया. भाई करना है. भाई करना है. मतलब चलो फिर बीच पे चलते हैं. तो वी वेंट ऑन अ बीच. मैंने कुछ थोड़े बहुत शॉट लिए, बिकॉज सनलाइट अच्छा है, वो पूरा ऑन फील आ रहा था एंड उसका आउटफिट भी अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने शूट कर लिया. वो बोले भाई कैसा रहा. भाई मुझे खुद को भी डाउट है कैसा रहा. बट नहीं, आई वाज कॉन्फिडेंट कि अच्छा है. आई वाज फीलिंग गुड कि भाई ने जो एक्टिंग की है, मतलब पूरा ऐसा चश्मे निकाले, पहने, शर्ट वर्ट उड़ाया है, बोट पे खड़ा रहा है, ये वो मतलब पूरा ही किया उसने. जस्टिफाइड माय ऑल विजन कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसने वो किया. तो मैं घर पे आया तो गाना भाई चल रहा है. हाँ यार मैं इसको मैं शाहरुख का लुक देने वाला हूँ. तो we make sure कि we do that thing. तो मैंने रात को एडिट किया. तो मेरा I come to your point, editing work. So usually जो भी मेरे जो personal videos, whatever you see in my profile, just follow my profile on Instagram. It's DIPPJ and Shreyans as well. I'll put the link in the below. So please do follow this guy. He is an epic photographer and you will really like his work. It's very interesting. Yeah, thank you. Very interesting. So I put it first cut and I fall in love with it. Like bro, fuck, क्या हो गया यार? I was watching that video again for 10 times. Like, this is it. और बहुत रेयर होता है कि जब खुद के काम को ऐसे देख के मजा आ रहा है बार बार. Usually I was never happy with my work, but this is the first time I was wow. अच्छा है. फट गई मेरी. हाँ नहीं, मेरे को भी काफी अच्छा लगा. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. भेजा मैंने. उसको बोले भाई क्या बना दिया ये. भाई क्या बना दिया. बोले भाई जबरदस्त. ओके डन, कल अपलोड कर लो. हाँ डन. वेरी नाइस. बट ऐसा कभी होता है कि मतलब यू आर वर्किंग विद समबडी एंड देन क्या बोलते हो बार बार एडिट बोलते रहते हैं. देन हाउ डू यू ट्रीट दैट? बिकॉज ये तो एक हो गया जिसमें यार आई थिंक दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, ही इज ऑल्सो क्या बोलते हैं वेरी डियर फ्रेंड ऑफ यू, and then you guys actually match your vibes. Yeah. है ना. तो when that vibe is matching, then whatever you make, you always like the work. I think ये मैंने realize किया है over the years कि if you match the vibe with the person ना, आप कुछ भी बना के दे दो. आप कुछ भी शूट कर लो. You just create magic because you both are so comfortable with each other. Yeah. And that's the reason I like to repeat my models and my subjects. Exactly. Because that is what I think makes you a good photographer, because then you are able to experiment so much all the time. And
यू डोंट हैव टू थिंक यार ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोच पाएगा कि नहीं सोच पाएगा, है ना. सो दैट्स व्हाई यू आर इन दैट कंफर्ट जोन वेयर यू जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर, राइट. बट दिस इज ओनली विद द पीपल यू आर वेरी कंफर्टेबल विद. व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क एंड यू थिंक इट्स अ वेरी गुड वर्क, you have put up a heart and soul, you have put the right music, right edits, right cuts, right effects, you have made something really fantastic. अभी तो रील का ज़माना है भाई, तो अभी we are talking about reels only end of the day, right. तो now अब जब ये आप 30 सेकेंड या 1 मिनट का जो वीडियो बनाते हो and you think that you have done a great job, but then now your subject or your client or your model or your actor, they want you to edit, and then they will get you one edit, second edit, third edit, fourth edit, and then they're still not happy, and then now over the period of 5 edits वो edit आपका रहा ही नहीं. Exactly. वो कुछ और ही बन गया है. Yeah. Then how do you treat that situation? मतलब फिर क्या होता क्या उसके बाद में? So in this situation ना there are two ways. Either you listen to सामने वाला, उनको क्या चाहिए, you try to understand and just fulfill their requirement. Don't put your effort in that. अपना दिमाग मत यूज करो. अपना दिमाग जो वो बोल रहे वही कर दो. जो उनको जो चाहिए, क्योंकि see end of the day ऐसा यूजुअली होता है जब तुम ब्रांड शूट करते हो, बिकॉज दे हैव देयर ओन विजन, देयर ओन पर्सपेक्टिव. सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि लोग ओके आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाट आर देयर नीड, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट. तो आई ट्राई टू फुलफिल इट. अच्छा दिस आर देयर रिक्वायरमेंट, आई शूट अकॉर्डिंगली लाइक दैट. सो आई जस्ट एडिट लाइक दैट, or whoever is editing my thing. So I have clear instruction. Okay, bhai, this is the brief. You have to follow this instruction, and this is what. And like I have never faced this kind of situation for 5-6 time edit. I have उतना नहीं हुआ है. उतना नहीं हुआ है. 1-2 time like that's obvious. Like. But गुस्सा आता है ऐसे कि re-edit क्यों करवा रहे हैं, मेरा बेस्ट काम था. नहीं यार, ऐसे लगता है paying us such a ओके क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है. मेरे को फर्स्ट एडिट में गुस्सा आता है, अगर चाहे वो पेड हो नहीं हो. कोई आदमी चेंज बोल देता है तो मेरे को लगता है बॉस अब आपने खराब कर दिया है काम मेरा. आई कैन फील यू, बट वो होता है कि ऐसा बोलता है भाई यू नो दिस इज रियली गुड बट आई थिंक वी शुड चेंज दिस शॉट. ऐसा झटका लगता है ना कि भाई क्यों. मैं आपको एक बताता इंसिडेंट बताया, एक पूरा एक मोमेंट बताता हूँ. सो देयर इज दिस वन एक्टर वी वर्कड विद, यू नो हर, आई विल नॉट टेक द नेम. ठीक है, वो आई हैव शॉट विद हर. ऑफ कोर्स यू हैव शॉट विद हर. ओह गुड, वेरी ब्यूटीफुल. I mean, I really liked her pretty beauty face, whatever. I was very excited to shoot with her, right? And I shot with her also. We did 2 looks in 20 minutes. कितने टाइम पहले की बात है? बात अब मैं बताऊँ, नाम तो आपको बताऊंगा ही बाद में. ऑफ कोर्स नाम तो मैंने आपको बतानी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा. मतलब यू शुड आल्सो नो ना. तो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विद हिम. द सिचुएशन इज दिस दैट कि ना अभी है ना, मैंने क्या बोलते हैं, वी डिड 2 लुक्स एंड क्या बोलते हैं, वी डिड वेरी गुड लुक्स. मैंने फट से वो बोली मेरे को, मेरे पास बस 15 मिनट ही है. मतलब बहुत है. मैंने 15 मिनट में 2 डिफरेंट सेट्स किए, अपने घर पे ही शूट किया ऑफ कोर्स, और मैंने डिफरेंट एकदम लुक दे दिया, डिफरेंट. ठीक है, सब कुछ डिफरेंट किया मैंने. डिड वेरी गुड पिक्चर्स. एंड देन अब होता है ना कि अभी नया रील चल रहा है. देन आई हैव स्टॉप शूटिंग रील्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि क्या है ना, मैंने ना रील भी बहुत अच्छा शूट किया, फट से रील भी शूट कर दिया. चलो ठीक है ना, 2 मिनट में शॉट्स लिए, 10 फोटो आ गए अच्छे, और वीडियो भी मार देते हैं, वीडियो भी अच्छा आ गया, चलो डन, रील बना देंगे. अब मैंने फोटोज़ बना के फोटोज़ खींच के दे दिए, रीटच हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लवली, अपलोडेड, डन. अब उसके बाद में वीडियो बनाया मैंने, वीडियो बना के मैंने भेज दिया. नहीं मेरा पेट ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है. सी आई गेट द पॉइंट, लेट्स चेंज दिस शॉट, विच इज़ फाइन. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू. बट व्हाट हैपेंस ना कि आपने मेरे को दिए थे बस 15 मिनट, उससे मैंने 2 लोग शूट किया. शॉर्ट्स अपने पास बस 3 ही है. आई ओनली हैव 3 वीडियोज़. हाउ डू आई चेंज इट? एंड वीडियो इज समथिंग विच आई कांट लिक्विफाई. I can't liquefy videos. I can liquefy photographs. Videos I can't. And see, she's very fit. That was not a problem. She's looking extremely beautiful, very nice. Thing is कि I know you have the I know कि अभी आप अपलोड करोगे तो 5 जगह लोग बात करना शुरू कर देंगे. You will immediately people will start trolling you. ये लोगों को मारता है कि यार ये ट्रोल वाला पार्ट लोगों को मार देता है. 5 लोग ये बोलेंगे अरे भाई but the problem is I feel that they should stop caring about. They should just let them know कि भाई I don't give a fuck. दे मेरे को, इधर रख देता हूँ मैं. खाली हाँ इधर रख देता हूँ ना. मुझे लगा और चाय आएगी. बनाओ क्या और नहीं. तो फिर मतलब ये जो बात हुई, तो फिर मेरे को लगा यार इतना अच्छा वीडियो बना के दिया था. इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस ऑल्सो, बट आई गेट द पॉइंट दैट यू देन इट इज़ नॉट फन.
है ना. चलो ठीक है, उसके बाद में फिर भी मैंने एडिट करके दे दिया. फिर सेकंड लुक की बात आई. सेकंड लुक भी मैंने बना के दिया. सेंड मी द रॉ फाइल्स. कोई मेरे से रॉ फाइल मांगता है ना, आता माजी सटकली. नहीं भाई ऐसा मत करो. बट नहीं, मेरे को देखो गुस्से की बात नहीं होता क्या ना, मेरे को ऐसा लगता है कि यू आर नेवर सपोज टू आस्क रॉ फाइल्स. यू आर नॉट सपोज टू आस्क रॉ फाइल्स टू एनीबडी. दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. इट्स लाइक एक मिनट. हाँ, Is the I am the only one who always send a raw file to everyone? स्टॉप इट. स्टॉप दैट शिट. तो आई टेल यू ये हुआ क्या है अभी. इट्स लाइक मी गोइंग टू मनीष मल्होत्रा's स्टोर. I'm giving you a comparison, ठीक है. Manish Malhotra is a very big name. I don't even know him that well. I don't even know at all. But ठीक है, I'm just giving you an example. It's like me walking into Manish Malhotra's store, liking a dress, but then asking कि भाई मेरे को fabric दे दो, मैं करवा लूँगा. हाँ वो भी है. क्या बात कर रहे हो तुम. मेरे पास आए मेरे स्टाइल के लिए ना, मेरे काम के लिए. तुमको रॉ फाइल का तुम करोगे क्या. तुमको किस लिए चाहिए. और रॉ फाइल्स है ना, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव सच रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंडिया, और मे बी नोबडी इज रियली केयर टू टॉक अबाउट इट. बट यू नेवर सपोज टू गिव अ रॉ फाइल. दैट रॉ फाइल इज द ओनली property you have with you. It's like you giving away your property to somebody else and they can do whatever the hell they want to do. What happens is कि वो लोग किसी को भी कहीं भी यूज़ कर ले. आज आपकी फोटो अगर मैं आज की डेट में फोटोज किसी को भी हाई रेज नहीं देता. मैं 2 MB से 1 MB के ऊपर फाइल देता ही नहीं हूँ. मैं कभी नहीं देता. उल्टा अगर इंस्टाग्राम, अगर मैंने टेस्ट शूट किया है इंस्टाग्राम में फोटो जानी है बस, तो ओनली 500 KB फाइल. They should not be able to zoom it also. You know why? Because what if they give the picture to some other brand? And what if they put it up on hoardings? What if they give it for paper, newspaper or magazines? I don't get paid for that. Either you pay me for your prints and then you can take the picture. You are not paying me that much money. You are paid me only for Instagram. I am charging certain amount only for Instagram. Not for magazine, not for hoardings, not for anything else. अगर आपको लग रहा है कि आपने मेरे को so and so amount, XYZ amount दे दिया है और आप you own those pictures, you don't. The picture belongs to photographer. Exactly. है ना. That has happened for the longest time possible. ये तो क्या है, आज की डेट में यंगस्टर्स आ गए and they feel कि हमारा काम यूज हो रहा है, हमारा काम इंस्टाग्राम में जा रहा है. They feel happy कि अच्छा हमारा काम इधर जा रहा है. But then they don't know that they are getting used. Exactly. They are getting used left, right, center. And what will happen is कि after a period of time, nobody will pay you anymore. Because that attitude has already started. कि now nobody has the money to pay you because of all of this. Because everybody said कि अभी कर लेते हैं बाद में देखेंगे. But आपके इस चक्कर में ये हो गया है कि now they do not want to pay anymore. because उनको लगता है सब फ्री में हो सकता है. Exactly. है ना. तो और चलो they have paid XYZ amount for the photo shoot, whatever you did for Instagram or whatsoever. या फिर आपने स्टाइल फाइल कर लिया, जो भी कर लिया. अब आपने कर तो लिया, उनको लग रहा है उन्होंने पे कर दिया, they can do whatever they want to do. But they are not supposed to. They're supposed to pay you if it is getting featured in a magazine. They're supposed to pay you if it is getting printed somewhere else. They're supposed to pay you every single time they use that image. And it's not their image. It's the photographer's मेहनत. अगर आप उसका rights नहीं pay करोगे, then how is it even making sense? Why are you saving up so much data in your hard disk? GBs and GBs of data, right? Delete ही कर दो फिर. फिर क्यों रखा है इतने. मैंने मेरे पास नहीं करके भी आज 70-80 TB के हार्ड डिस्क पड़े हैं मेरे पास. कब से 2010 से शूट कर रहा हूँ मैं. तब से मेरे पास अभी तक ये सारे के सारे फाइल्स पड़े हैं. करूँ क्या मैं उनके. डिलीट कर देता हूँ. You can use the hard drive again. है ना. I can use my hard disk again every month, every 2 months I'm buying a new hard disk. 8 TB, 2 TB, 8 TB का हार्ड डिस्क मैं लेता हूँ हर 2-3 महीने में कि भाई क्योंकि वीडियोस भी शूट कर रहे हैं, फोटोज भी शूट कर रहे हैं, मैं क्यों डेटा मैनेज करूँ अगर मेरे को आपको रॉ फाइल दे देने हैं तो. तो दैट्स वेयर आई फील कि यू डोंट आस्क रॉ फाइल्स. यू नेवर आस्क फॉर रॉ फाइल्स. यू दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट यू मेक. इफ यू वांट टू सी समथिंग, यू कम होम एंड यू सी इट. बट यू डोंट आस्क फॉर इट बिकॉज it's better because you see it in front of me. You want to see something, you come here and sit down with me. When you ask for raw files, it becomes very disrespectful. This is what I feel. I don't know if I'm wrong or right, but this is how the world should be working, because I have met some of the biggest photographers in the world, and every time they have only said one thing: never ever give your raw files. You could be wedding photographer, product photographer, fashion photographer, any type of photographer. You should never give raw files. You are right, but you know, sometimes what happens that for the selection and all, like no, they understand. Then you send them low res files, na? Exactly. Exactly. So you send them low res. You send low res files so they can understand. They can select raw Definitely. file. Even now I get your point, but I also don't give a ARW whatever. I'm talking about that only. Low res, तो of course that to you have to give. नहीं तो selection कैसे? Yeah, exactly. But अभी तो I have figured out few more things where I don't even have to send them all the files. I give them a link. They can do the selection on that only, and that's about it.
OneDrive or something. Not OneDrive also. So what I've started doing is I'm using Capture One ना. अब Capture One में shoot करता हूँ मैं. So what I do is कि Capture One में now they have started doing this. You pay them 500 rupees per month, and they have created a iCloud version of it. Is it? So what you can do is you can just share the link. And all the pictures का link उनके पास client के पास पहुंच जाएगा, right? You send them the link. उसके बाद में they can just do 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star rating. ऐसे? है ना? And they can also comment what I don't like about this picture, what I like about this picture, what needs to be edited. है ना? तो वो होने के बाद में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक मेरे लैपटॉप मेरे कंप्यूटर में अपडेट हो जाता है मेरे फाइल. द मोमेंट आई स्विच इट ऑन वो अपडेट हो जाएगा. मैं आपको दिखाता हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी इट हैज लास्ट 4 months हैज बीन सो ब्यूटीफुल फॉर मी. This I think you should make a separate. और ये एक महीने का उसका एक्सपायरी डेट रहता है. तो एक महीना इज अ वेरी बिग टाइम. एक महीने में सिलेक्शन हो जाता है किसी का भी. तो मतलब मस्त मेरे पास सिलेक्शन आ गया. इट्स बीन अपडेटेड. आई विल ओनली वर्क ऑन दोज पिक्चर्स व्हाट माय क्लाइंट हैज सिलेक्टेड एंड आई एम डन. सो इसमें क्या होता है ना कि पहले मैं OneDrive में लिंक भेजता था. तो वो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नंबर टाइप करो. नंबर भी नहीं होते कभी-कभी. तो फिर फाइल को ढूंढते रहो क्योंकि उन्होंने नंबर सेव नहीं किए. तो अब वो क्या जाता था, इसमें मेरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा मेरा वेस्ट होता था. बट एट दिस पॉइंट दिस 2 hours I've saved. Now all what I have to do is edit, send for retoucher और retouch हो जाएगा. तो that way this is one thing which can really help you if you are going through this trouble. Please help me with this. I will teach you after this thing. I'll sit down with you and I'll take your class now. Because whenever we meet, we end up. Like I personally end up learning one or two things. Same thing with me. For me also, even when I meet you also, ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है यार. कुछ ना कुछ. If not with the work wise, maybe with the talking wise, the perspective wise, you get to learn something or they know. So let's get back to the thing you shot and someone asked for the raw files of the video. हाँ तो. So I'll tell you क्या होता है ना कि some people want to see कि क्या shoot किया है. Like you don't take that as a negative way or maybe some other way कि why they are asking me Robert. Maybe क्या होता है कि like they want to see अच्छा okay this is nice shot, this second to this second is nice, so let's work out from this second, so they can suggest you कि अच्छा ये part ना अच्छे है, तो let's work on that. So that is also okay. So what I face, I get it. वो एकदम सही बात है. मैं उसमें गलत नहीं है. But मेरे को ऐसा लगता है ना कि when you start giving the raw files, no, वो again it's the back to the same point. See, they are not wrong. गलत कोई नहीं है. सबका अपना पर्सपेक्टिव. वो भी सही है कि आप जो बात बोल रहे हो एकदम सही बात है कि यार सामने वाले को देखना है कि ये सेकंड बहुत अच्छा है. I get the point. But यार वो आपका ही चेहरा है. वो आपकी ही बॉडी है. Some people love to see their face. And also the thing is कि क्या है अब जो at least क्या है अब people like who have experiences, they know कि this is the good part. Now I understand every female body, every male body. I know कि where they are looking nice and where they are not looking nice, है ना. तो after of course 2-3 मेरे को एक voice note भी आ गया कि I'm a very big actress or model or so and so and he can't be treating me like this. So I'm like okay fine, whatever. Block them. I'm not block them. I was like fine, whatever, take it. I send them the link. अब क्या हो रहा है, ये ड्रॉपबॉक्स का लिंक नहीं खुल रहा है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है. अब मैं ये करते बैठा हूँ. नहीं वो हमारा काम नहीं है. अब मैं ये करते बैठूँ. मैं इसलिए आपको भेज नहीं रहा था. मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया. आपको अच्छा जो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे को बताओ, मैं चेंज कर देता हूँ. अब बोल रहे हैं ड्रॉप ये लिंक नहीं चल रहा है, इसमें ये अपलोड नहीं हो रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है. बोला उसको डाउनलोड करके VLC में प्ले करो क्योंकि 4K फाइल है. वो लोग रॉ फाइल है. फोन में देखना. अब उनको फोन पे देखना, फोन पे प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि वो फॉर्मेट ही अलग है. हाँ. It's not even MP4 format. I think it's MOV format or what format, I don't know. Some format which doesn't play on iPhone. Since we are shooting on, I was actually shooting 422. MOV होता है. नहीं होता है, but 422 16-bit वाला फाइल, 12-bit वाला फाइल है ना. That's 12-bit, right? So that's 12-bit फाइल. iPhone 14 Pro हैंग हो जाता है. तो वो चल नहीं रहा है. अब वो मैं उसका क्या करूँ? अब मेरे लैपटॉप में नहीं चल रहा है. बोला मे बी आपका लैपटॉप भी पुराना है, मैं क्या करूँ बताइए. Okay, now I have to convert the video and send. I'm sorry बाबा, I can't do this. आप लोग जो करना है करो, मेरे को काम ही नहीं करना है इस बारे में. मेरे को बात ही नहीं करना है. I don't want it anymore. Don't be like this. This is what I learned about my experience. If you be नहीं, I don't want to work with you here. So that will create your image bad. So never do that. So I have seen you are doing such a good. भाई तुमने हमको यहाँ पे बुलाया, हमारा क्वेश्चन आंसर करो. हम आज पूछते हैं तुमको how you are feeling after working 10 years in this industry. Very good man, I love it. I know you how like Shreyans Dungarwal who shoot indoor kick-ass picture and who's famous in South. That
That's how I know you. I'm a South boy man. South से निकल के अपन यहाँ पर आए. हमारे जो मिश्रा जी है ना तुम्हारे ब्रोकर. हाँ मेरे घर वाले रहा. राइट मिश्रा जी तू उनसे बात कर रहा है अभी भी. भाई मैं तो मिश्रा जी को हाय हेलो करता रहता हूँ. अरे वाह क्या बात है. मैं बोलता हूँ आओ. पंकज मिश्रा. पंकज तो मेरे को बोलते मैंने श्रेयांस किधर है. बोलते वो तो हैदराबाद है. मतलब आपको जब भी पूछता हूँ वो हैदराबाद ही होता है. हाँ मेरी उनसे बात हुई नहीं है बट काफी टाइम से. तो उन्होंने बोला कि you bought this house. हाँ this is my own house only. Then last time you said this is rented. You're lying. No I never said rented. Dude I said this is my own house. I never said it was rented. Shreyans is very rich. No I'm not rich भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बहुत मेहनत किया है मैंने. इतने पापड़ बेले लाइफ में मैंने बहुत पापड़ बेले. You have done hard work and I think that's inspiration for all of us. Thank you so much man. Yeah. So how like I get it how you feel irritated when someone asks. See it's not about irritation. Very honestly I'm very good to my clients. I'm extremely good. I don't know if you meet any actor I've shot with. The only review you'll hear about me is I think good. He's a good guy. They are talented. And talented to छोड़ो मतलब they like my vibe right. But this what happened was कि I just did not like the way she came back to me on that voice note. है ना. That voice note was very messed up for me. I mean see messed up as in nobody talks to me like that. Nobody should have the balls to talk to me like that. You could be as big as possible. It doesn't matter. I am giving you my time. You are giving me my time. Your time. Let's respect each other's time. Na? You cannot be talking all of this nonsense. If I'm telling you I don't want to give raw file, find another way out. What else can we do? Either you come sit together, find out something. Then उसके बाद मैंने आपको भेज भी दिया raw file. ये खुल नहीं रहा है. What is it trying to do? I'm not trying to do anything. What's wrong with you? You talk to me nicely. Or maybe I'm talking via somebody, so maybe I'm receiving everything in a wrong way. See, what I'm trying to say is that I'm not complaining. I'm just saying that these are the situations which can become a little problematic, and then sometimes all the respect, all the things I had for that particular actor or model, everything just swept off because now I don't have anything great because I was a fan of that girl, right? And all of a sudden I'm like, whatever, I don't want to work with you anymore. I'll talk to you. Yeah. We'll talk about it. So I mean again because see what happened is you had some different experience. Like I think I know the person and I have shot with her and I always had a good experience. So I'm saying shooting time very good experience, Baba. Yeah. Shooting time very good experiences. I treated her very nicely. She treated me very nicely. Is this over a call? Maybe something else, or maybe I'm talking through a mediator. Because I'm not talking to directly, right? Exactly. तो मीडिएटर के हिसाब से हो रहा है तो मीडिएटर कुछ भी बोल रहा है मेरे को वो भी मेरे को अजीबोगरीब बातें बोल रहा है तो फिर मैं बोला भाई ये तो because nobody has ever spoken to me like that, right? So I'm not liking it. तो मेरे को इसलिए एकदम वो it's not irritating. It's just not fun anymore after that. Because when you talk to somebody like that, then it's not fun anymore. So that is something which was like nah. I get it now. I think what happened in your case is like you are communicating with some mediator person. Yes, that's the thing. So maybe this middle person ना वो आधी बात है ना आगे communicate ही नहीं करते. उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या बात कर रहा है शायद से. They have to take care of your side as well, her side as well. So क्या बोलते हैं वो कुछ बोलती है तुम कुछ उसको बोलते हो वो उसको कुछ बोलती है. पूरा गड़बड़ हो रहा है वहाँ पर. पूरा गड़बड़ तो that's why always communicate direct. No, but see, I did not have a direct number, very honestly. तो मैंने इससे इतना बात भी नहीं किया था. Instagram जिंदाबाद. बस वही कर रहा था next time. Maybe अभी तो ठीक है, it's fine. I'm done with that whole situation. छोड़ देने का. वो ऐसा कोई mark नहीं है. It's just that since we know, yeah. That's why I thought कि ये भी एक बातचीत हो सकती है ना इस बारे में. It's a different topic altogether. But yeah, that's something. और बताओ फिर. हम कहाँ थे? We were talking about the editing part. So that conversation is over. Now we are done with the editing part. Coming to photo editing part. Chalo. So are you retouching your pictures on your own or you are giving it to your editor? I don't know how to retouch picture. But God's grace, I found one of my dear friend from Ahmedabad and he's just taking care of my retouching part. And is it expensive, retouching? We have different deal. Okay. And he's doing a decent job for me. Like not decent, he's doing amazing. He's giving me one like whatever I tell him कि भाई मुझे ये zone चाहिए मुझे ज़्यादा smooth नहीं चाहिए texture चाहिए. So he always try to give me his best and he never fail to deliver something bad. Okay. So I just outsource my editing part. I just send it to client कि भाई this is the raw image. You only select the image you are gonna post. Okay. There's a strict But now how many pictures are you giving per look? If you are doing style file images, अभी तो style file काफी चल रहा है celebrities के साथ में तो per look how many images are you giving retouching में?
5 मैक्स, उससे ऊपर उनको मर्जी है कराने की, तो आई डायरेक्टली शेयर हिज नंबर, देन दे हैव टू पे डायरेक्टली तुम कोऑर्डिनेट करो, व्हाटएवर हिज चार्ज यू हैव टू पे डायरेक्टली, सिंपल. ओके ओके, तो दैट्स हाउ, लाइक मैं सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करवा देता हूँ, सो वो मिसकम्युनिकेशन रहेगी बिल्कुल ही ना रहे. ओके ओके, या एंड so that's like you are doing a style file, you are doing 4 pictures from in your package, एंड आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा फोटोज हो गया वो डायरेक्टली स्ट्रीट टच से बात कर लो, जो भी पे करना है कर लो, बट देन यू आर नॉट रिस्पांसिबल अबाउट, आई एम नॉट रिस्पांसिबल. उसके बाद जो 4 फोटोज का आपका रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद में इट्स नॉट योर रिस्पांसिबिलिटी. मतलब रिस्पांसिबिलिटी एज इन मतलब you then you don't want to talk money anymore, then you already touchable talk the money part. So I have always been very transparent with my client. Okay, this is the thing, this guy is charging me this much, okay, you have to get done from this, so this is his charges, if you are okay then get it done from him, because he already done the same files for you. So I'm very transparency, I keep transparency. Very good, very nice. So अभी क्या बोलते हैं, अभी तो आज के डेट में आई थिंक फोटोग्राफर, स्पेशली फॉर ऑल द फैशन फोटोग्राफर्स, जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, नए जैसे भी लोग हैं, एवरीबडी इज हैविंग लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ द स्टाइल फाइल फोटो शूट्स. All the celebrities are going for the event and they want pictures. But do you know who started this? Who started this style? Sonam Kapoor it is. Yes. I knew it. I mean, she actually changed all the photographers' life because of this one particular thing. Every photographer has a lot of work, at least. Yeah. है ना? क्या बोलते हैं इस बारे में? Definitely, because you know this is the place where you can, in very less time, you can show your creativity, how powerful you are. Like sometime some people do amazing job, some people बेचारे वो लोग उनकी हिसाब से अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं. But yeah, everything comes with a advantage and disadvantage. So I can say advantage is like everyone is getting a platform to showcase the work. True. Disadvantage is also कि people not willing to pay. Willing to pay or very less? It's very less. That's there. It doesn't justify someone's art or whatever he's creating. So I'll tell you about this one thing. I mean, what they pay, उसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला है. Exactly. है ना, उसमें लिटरली कुछ नहीं होने वाला. बट देन ऑफ कोर्स आई आल्सो अंडरस्टैंड कि एक लोग का आदमी और कितना ही पे करेगा. Exactly. है ना, and that picture is only going on Instagram, so I myself can't be this thing. So what I have told in my mind is that, and whenever I talk to any celebrity also, I tell them, listen, I'll do the shoot only if you let me experiment. I'm not coming to do this basic background shoot. Yeah. You know, that which I don't do also. तो अगर if you're game for that, only then you give me a call, then I'll come and do the shoot. नहीं तो I don't want to do it. So I make it very clear with their managers, because of course the celebrities never call their managers. I tell them, if I can experiment with your actor, with your celebrity, I will definitely come and do something new. If you want something new, then you give me a call. Yeah. Otherwise I can't do it, because आपका पैसा इतना कम है कि मैं उसमें मेरे को लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा. उससे मेरे को मेहनत नहीं करनी है. मतलब 70% तो बैकड्रॉप और लाइट में चला जाता है. हाँ, मतलब यार वो भी छोड़ दो यार, चलो सब सामान घर पे ही पड़ा हो, सारा इक्विपमेंट अपने पास own. Again, Shreyans is very rich. Shreyans is not rich. Shreyans has put in so much hard work. Ignore this. He has sold his soul for this, I feel. but still, yeah. जो भी है. But what I'm trying to say is कि क्या ना, it is still not enough, because what happens is ना, that you are living in Bombay. Yeah. You are paying good amount. You have to pay 30,000-40,000. That is also less, Baba. You end up paying, people are paying 70,000-80,000 for 1 BHK, 2 BHK. बेंडर में रहते हैं. तो जो भी है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है बॉस. उसके बाद में रेंट, उसके बाद में बिजली का बिल, खाने पीने का बिल, घर पे खर्चा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मेड भी चाहिए, उसके बाद कपड़े जूते भी अच्छे पहनने को, बिकॉज वी आर शूटिंग सेलिब्रिटीज एवरी सिंगल डे. वी वांट टू बी लुकिंग गुड. ऐसा नहीं है कुछ भी पहन के छपरी बन के पहुंच जाओगे तो चलेगा नहीं ना. यू हैव टू बी, नहीं तो दोज एक्टर्स विल नॉट इवन लुक एट यू. लाइक आई हैव सीन एक्टर्स, राइट, व्हेन यू आर ड्रेस्ड वेल, दे विल टॉक टू यू वेरी नाइसली, दे विल बी ओपन, यू माय गॉड वेरी नाइस, लवली वर्किंग विद यू. बट इफ यू लुक लाइक अ छपरी, दे विल नॉट इवन लुक एट यू. दैट पक्का से नीचे से तो ऊपर ऑफ कोर्स देखेंगे ना. देयर आल्सो लुकिंग एट यू ना, एंड दे रिमेंबर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे मीट यू, दे रिमेंबर कि ओके, आई नो दिस गाय, आई नो दिस गाय, आई वर्क विद हिम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक गुड. आई एम नॉट सेइंग कि क्या बोलते हैं एकदम ही बढ़िया बन के गुची के पैंट पहन, गुची के कपड़े पहन के जाने, वो नहीं बोल रहा हूँ. बट बी बेसिक नाइसली, सो यू लुक क्लीन, बी वेल शेड, बी वेल ग्रूम्ड. आई मीन फॉर फीमेल फोटोग्राफर्स, आई थिंक दे ऑल आर वेरी मच, यू नो, दे आर ऑलवेज लुकिंग वेरी good, top notch, up to the mark. But male photographers also, if sometimes, you know, I've seen many guys, you know, ऐसे पहुंच जाते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं. मतलब मत किया करो यार, शॉर्ट्स पहन के चले जाते हो, आधा क्या पहन के, गंजी पहन के पहुंच गए. अगर
दिखावा करना है कहीं और कर लेना, बट ये इस टाइप के शूट्स में जाते थोड़ा बंठन के अच्छे से जाओ तो भाई सामने पटाने नहीं यार, हाँ यार ऐसे क्या जा रहे कर रहे हो यार तुम लोग, डेट पे जा रहे थे। बट ठीक है, सो जो भी है मतलब आई मीन टू से इसकी दैट यू शुड आल्सो लुक गुड, That दैट्स is रियली important. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even I realized lately because honestly, I'm like how you won't believe. So like how I started, I never had that money to invest in clothes. So what I used to do, like I just go to Lokhandwala market and I used to pick some t-shirt and joggers and everything. So that's how I made sure that like, see, I'm going for some shoot, I should look good. So people can at least give some kind of respect. नहीं तो भाई भगा देते हैं सेलिब्रिटी क्या उधर को जो गार्ड है वही नहीं देखेगा तुमको, वही नहीं देखते तुमको, अरे भागो इधर से. नहीं होता है. So looking good is important again. I'm not telling you wear Zara, but H&M में सेल चल रहा है. ब्रांडिंग कर दे तू H&M की, सबका ब्रांडिंग ही करने आया है ये बंदा. बताओ फिर. हाँ, but see, so coming back to the point where so I mean they are not paying that well, and they can't pay also, and we also can't expect much, है ना. But end of the day I feel कि अगर आप मेरे को experiment करने तो what happens is at least for my portfolio I can just show कि भाई with the celebrity I can do this kind of work. I've been doing such work because I feel that कि मतलब एटलीस्ट मेरे को मजा आता है फिर यार घर आके मेरे को रिटच करने में या रिटच करवाने में उसको. You feel good. आई फील गुड कि यार कुछ नया इंटरेस्टिंग किया मैंने आज कुछ अच्छा किया. हाँ, लाइक अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद नीति मोहन, शी इज अ सिंगर ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी नोज हर. एंड देन क्या बोलते हैं, वी डिड लाइक बैक टू बैक 6 shoots with 6 looks in the month, in the span of 2 months. And then her manager hired me for like proper 6 shoot. And we created different pictures every time. I was like, and it was so good to work with her because she was more than happy to experiment. Yeah. Right? And that's the kind of people I've been wanting to work with. तब मेरे को यार लगता है कि चलो ठीक है पैसे कम आए, बट यार मजा आया काम करने में. मेरे को बहुत मजा आया कि ये 6 दिन मैंने कुछ अलग अलग काम किया. And also now what happens is कि all my assistants also, they also love it. Because for them it's like अरे यार कुछ crazy करना है, तो they are also putting their head in space into ऐसे लाइट करेंगे वैसे लाइट करेंगे ये करेंगे, सब लोग पागल हो जाते हैं. So it's a good jam session for all of us. Exactly. So that's something which I really enjoy about these style file images where I can experiment and go crazy with the actors. Yeah. We are back again. ओ भाई दीप भाई, तो अपना अपन कहाँ पर अपने रोका था लास्ट टॉपिक अपना? भाई अपनी इतनी बातें हो गई. उस टाइम आजान शुरू हो गया था. And then what were we talking about? Editing. You're talking about editing, तो you're done. Editing. Data submission नहीं, that was done. वो भी हो गया था. चलो ठीक है, आई थिंक जो भी है अपनी बातचीत तो हो गई. ठीक है, आई थिंक जहाँ पर भी कटा है कटने दो, कोई बात नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. व्हाट्स योर वर्क फ्लो लाइक अभी, मतलब हाउ, ठीक है फोटोग्राफी अपन कर लेते हैं, राइट? इट्स नो बिग डील, गुड जॉब वी डू. उसके बाद में लाइक व्हाट्स लाइक वर्क फ्लो लाइक, एडिटिंग कैसे होता है, रिटचिंग कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे करते हो डेटा का, कहाँ पर जा रहा है डेटा, कितना बच रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्स द होल प्रोसेस लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ मच ऑफ अ ट्रबल यू आर हैविंग. इज इट ईजी टू put these data together? Are you able to keep them safe, and how do you keep it safe, and what's your extra खर्चा what you have? मतलब ये तो अपन को मालूम है कि कैमरा है, इक्विपमेंट है, लाइट्स है, हेन है, जो भी है, बट आफ्टर शूट, आफ्टर रीटचिंग, एडिटिंग, how do you keep सांस ले लो भाई, सांस ले लो. इतने क्वेश्चन तो ना वो आईटी डिपार्टमेंट भी नहीं पूछते जितने आपने पूछ लिया है. So yeah, my workflow for the personal shoots, so it's very easy. I keep it like I send them a reference. Okay, this is what I'm thinking. We are not gonna copy, but this is what I'm thinking and planning. So in shoot as well, so we both are clear ki what we are trying to achieve. So we keep reference as a just reference, not for copy. And after shoot, I just make sure that my client or respective person get the images or video, not video, images within 24 hours. So मेरा काम ये होता है कि like मैं घर पहुँचता हूँ, जो भी तो कुछ करेक्शन करना होता है कैप्चर ऑन में या समथिंग, आई मेक अ लो रेस फाइल एंड आई जस्ट अपलोड इट ऑन वन ड्राइव एंड आई विल जस्ट गिव इट टू देम. सो वो क्या होता है ना कि जब भी शूट होता है ना तो लोगों का ना एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है. वो दिन ब दिन वो ना थोड़ा फिर कम होता है, तो वो नहीं
वो मैं नहीं होने देता. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द वीडियो, सो मेरा ये कंसर्न होता है कि मैं जल्द से जल्द मैं तो दे सकूँ. तो क्या होता है कि जल्द से जल्द आप देते हो तो वो एक्साइटमेंट भी रहता है, दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो इन जोन के अच्छा फटाफट हो रहा है काम, फटाफट चीज़ें मिल रही है, एंड दैट लीव्स यू अ गुड इंप्रेशन कि अच्छा इसके साथ हम शूट करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम बायसिंग अबाउट माई सेल्फ दैट, but yeah, that is the thing. I always deliver thing very fast. And about the commercial shoot, like that, this Instagram micro ad films, so they have a deadlines के कब के हमको पता चलेगा अच्छा आज शूट कर रहे हो तो हमको कल देना है. So I have to figure out कि अच्छा मैं इतने घंटे में शूट कर रहा हूँ. अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर मैं उनको जो उनका टाइम वो डेडलाइन है उससे पहले दे पाऊँ. तो वही चीज़ का आदत हैबिट मैंने बना लिया है. सो आई नेवर लेट माय पीपल टू कॉल कि भाई पिक्चर्स कब भेजो, उससे पहले रिसीव हो जाता है उनको ऑलरेडी, उनको रिसीव हो जाता है. एंड अबाउट डेटा मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एवरीवन हैव टू स्पेंड इन अ हार्ड ड्राइव. हाउ मच डू यू स्पेंड, हाउ मच हैव यू स्पेंड ऑन हार्ड डिस्क ऑन डेटा मैनेजमेंट? कितना स्पेंड कर दिया अभी तक आपने? I'm not sure. Since 1 year, I was not shooting much. 3 hard drive I have. 2 TB, which is full now. Okay. Now I have to buy, but I'm not in mood to buy. Okay. Then how do you plan to keep your data, next shoot ke data? I have to buy, end up. You'll end up buying it. Buying it, man. Yeah. So yeah. So in my hard drive, I have a separate folder. Like this is the year, this month, this name. Okay, photo, video, दो separate. Edit है, उसका अलग folder रहता है. So that's how I manage on even my OneDrive as well. I just keep the folder. उसमें photo, video, edited. Photo, video, edited. That's how I keep. So anyone who want to access a person, so they can have a liability. So they can choose whatever they want to see the picture, they want to see the video, they want to see the edited thing. So I just make sure that they get everything. और बाकी तो हम WhatsApp, doc file, आई मैसेज, वो सब तो चीज़ें है ही जाते रहते हैं. अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा तो बहुत ही बड़ा है. लेट मी एक्सप्लेन यू द होल थिंग. इसमें बहुत खर्चा होता है गाइस, बट दिस इज आई थिंक बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो द वर्क फ्लो व्हिच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ. अगेन श्रेयांस इज वेरी रिच. It's I'll tell you why, just to make my life easy. Okay, so now I'll tell you the whole process. अब मैंने क्या किया ना, so once we do a photo shoot, Capture One से link चला जाता है immediately. So what I'm doing is कि मैं हमेशा tether करता हूँ पहले तो. I always have my laptop right next to my camera. I do not shoot without laptop at all. मतलब मैं करता ही नहीं हूँ. अब actually ये हो गई आदत, ऐसे हो गई कि अब शूट ही नहीं होता बिना लैपटॉप के. इतनी गंदी आदत हो गई, शूट ही नहीं होता बिना लैपटॉप के. सो आई नीड माई लैपटॉप अलॉन्ग विद मी व्हेन आई एम शूटिंग. कमिंग टू दैट, सो व्हेन वी आर शूटिंग, वी आर द ऑलरेडी द एडिटिंग इज डन बिकॉज मैंने अपने प्रीसेट्स रेडी कर लिए. हर शूट के प्रीसेट मैं पहले बना के रख लेता हूँ. मैंने बना लिया है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक एडिट हो चुका है. बाय द टाइम द शूट इज डन, आई मेक अ लिंक कैप्चर वन से. आई टोल्ड यू अबाउट इट कैसे बनता है. लिंक बनाया, भेज दिया, तो इमीडिएट वो जा चुके हैं. बिफोर दे इवन लीव द प्लेस, द लिंक इज ऑलरेडी गॉन टू देम. ओके. एंड दे हैव द पिक्चर्स विद देम एंड दे कैन स्टार्ट सेलेक्टिंग द पिक्चर्स. एंड दे कैन बी हैप्पी. या दे कैन बी हैप्पी बिकॉज आज के डेट में 4G है अपने पास, तो इंटरनेट फास्ट है. फट से कनेक्ट किया हॉटस्पॉट में, पूरा अपलोड कर दिया, तो अपलोड हो चुका है. दे विल सी द पिक्चर्स, दे कैन स्टार्ट सेलेक्टिंग. बाय द टाइम आई रीच होम, द सिलेक्शन इज ऑलरेडी डन. या राइट. तो सिलेक्शन हो गया, एडिटिंग तो मेरा हो ही चुका था. एक्सपोर्ट टू PSD, सेंड इट टू द रीटचर. ठीक है, या तो खुद कर रहे तो खुद करेगा, या तो किसी रीटर को देगा देने का. तो उसको देने के बाद में इमीडिएट वो फोटोज आता है, give it to them, delivered. Coming to the point of maintaining data, now what I have started doing is that I've been following this for good 6-7 years now. Actually 7-8 साल हो गए मेरे को 1-to-1 data management. What I have started doing is that कि क्या बोलते हैं, एक तो मेरे पास SSD है, 4 TB का SSD है, जिसको मैं एडिटिंग रीटचिंग ऑन पॉइंट जो कर रहा हूँ मैं, है ना. ओके. ऑन पॉइंट रीटचिंग जो और एडिटिंग जो चल रहा है वो मेरे 4 TB में रहेगा, बट उसका बैक एंड कॉपी में रहेगा एक हार्ड डिस्क के अंदर. उसका एक और कॉपी रहेगा दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर. तो मतलब जस्ट इन केस इफ आई लूज माई SSD, then I already have a copy in my one hard disk, and if that also fries, then I have another hard disk. तो it's 8 TB के 1-to-1 चल रहा है. तो मेरा 8 TB प्लस 8 TB, तो उसमें जो भी डेटा है वो कॉपी पेस्ट. एंड देन आई हैव दिस सॉफ्टवेयर कॉपी क्लोन बोल के, क्लोन कॉपी बोल के सॉफ्टवेयर. उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हर 15 मिनट कॉपी करता रहता है. तो इफ आई मेक एनी चेंजेस एवरी 15 मिनट्स, जस्ट कॉपिंग everything random, whatever is happening, back and forth. So every 15 minutes it's just again updating. So what I've got is I've got a video का एक hard disk 4 TB का 1-to-1 copy. Then I've got photo का 1-to-1 8 TB का hard disk.
So it's always copying. And every time वो एक 8 TB full हो जाता है, then I get another 8 TB and then again I start the thing. तो 4 TB का खत्म हो जाता है, फिर से buy a new hard disk. So that way I have close to around 80 TB, I think 70 to 80 TB के बीच में मेरे पास अभी तक डेटा है पूरा मिला के, जिसमें right now we are doing 4K videos and 4:2 these days, so files भी ऐसे ही अपने. And then photos also I'm shooting uncompressed files, and each photo is around like how much 100 MB file, and that's also a lot. So that's a lot of management, data management. I mean it gets expensive. Plus उसके बाद में क्या Dropbox. Yeah. Every month you are paying for Dropbox. That's 700 rupees per month. है ना? Try OneDrive. It's cheaper. That's cheaper, but then it's not reliable. OneDrive. Right. I'll tell you. Problem is OneDrive का क्या होता है? OneDrive is a harassment to your client. It is the biggest harassment to your client. Your client is just pissed off. Yeah, this link is not opening. How do we access? Microsoft का मेरे को क्या बोलते हैं, ईमेल बनाना पड़ेगा कभी, फिर नहीं बन रहा है तो और मुश्किल हो रहा है. तो Dropbox doesn't work like that. You don't have a Dropbox file, no problem. Link को open किया, download किया, done. अच्छा. That's the ease of Dropbox. So I am using this OneDrive thing since couple of years. For me, data management is very sorted. So वो 1 TB का space देता है. So and if you have a group account, so I think it's like 6 TB they're giving. So मेरे लिए easy हो जाता है कि like whatever it is, after done with the shoot, I'll just upload everything over there. So मेरे लिए ना वो एक online cloud storage जैसा काम करता है कि अगर मेरे पास hard drive. But then you are giving your data to online drive, and it's never safe then. I don't know like what kind of photos are they, but when you are giving these files online, it's not safe. You are literally kept this file open to a OneDrive. They can access those files at any time. I'm not saying कि कुछ आपके पास कुछ secretive कुछ है, but it's like you giving away your data to somebody else. No, but you can put the क्या बोलते हैं अपना password etc. But whatever you don't know, if somebody has to hack it, if they want to hack your Instagram ID, how much time will they take? Exactly. It's so as simple as that. Offline data. I'm not trying to put you down, हाँ, मतलब it's just these क्या बोलते हैं experiences we are sharing, है ना? मुझे कौन सा सुनता है? मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है. Exactly my point, right? करना सबको वही, but I'm just letting you know कि these are the problems. This is a good point. So people can be aware of. You should be aware कि do not put something very sensitive out there. Yeah. It could be normal thing, but don't put anything sensitive. Is what I could just tell. Anyone can hack. Anyone can hack. Anything can be hacked. It's no big deal. How do you plan to make money? How do you plan to sustain as a photographer? Question is that because मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया है. अब के टाइम में all the cameras are getting expensive, memory cards are expensive, lenses are getting very expensive, all the lights are getting expensive. अब तो brands like Godox also is expensive. Is it? हाँ, it's expensive. अब कहाँ अभी कहाँ आ रहा है 20-30 हज़ार में कुछ भी नहीं आता है, 50-60 से कम में कुछ नहीं आता है. तो मतलब I mean, if you are buying pro photos, also 1.5 lakh, 2 lakh. But now they are also equivalent to pro photo. But you know, there is always. I'm not biasing. I'm not promoting anything. But there's always a quality about this pro photo thing. Of course, pro photo is very good. Pro photo brown colors, they have very nice lights. Yeah. There's no doubt about it, right? But at the same time, now, not every photographer, every photographer who's coming in the industry or whatever, no, but not everybody can afford it, right? So, but see, I'll tell you, आज के डेट में मेरे को लगता है Ellen Chromes are very good lights. They are one of the best lights. ठीक है, सस्ते में 30,000 में 2 लाइट आता है, उठाओ, यूज करो, बढ़िया. I still remember, I have used Ellen Chrome 400 for the entire my photography journey. I still can rely on that light. Yeah, because those are the best studio lights possible. They are the best studio lights possible. Till date, it is one of the best freaking lights possible, right? And you can't beat that shit. And it's a Sweden light. And you know how much you shoot fast. They never hang. They will never fail you. Never fail you. So, matlab, that can be a good choice for people if they want to get into the lighting system. Ellen Chrome is always a good option. They are very good studio lights. Outdoors you can't shoot because they need wires. So, उसके बाद में then you have Godox, Pro Photo, Bron Colors, and then अभी तो क्या बोलते हैं, we have this new brand in India, which is, what is that brand's name? अपना Westcoat. They have released Westcoat also. Westcoat is here. Westcoat is new in India. I think they are international brand. It's an American brand, but then क्या बोलते हैं, I think the lights are Chinese only. It's made in China. Everything is made in China. Everything is made in China, right? Only the Pro Photo and Bron Color are the only lights which are actually made in Sweden. They do not make in China, and that's the reason they are very expensive. I think they have a different light quality. Of course, they are very good light. Right now, I'm lighting with Pro Photo. The video lights, it's not even a video light. It's a fucking strobe light. It's lighting so beautiful.
So this beautiful, is so soft. it's a very soft light. So I love these pro photo lights. But coming back to the same thing, कि, you know, not everybody can buy these things, right? Yeah. And over the years, of course, आपको भी मतलब आपका एक सेट बैठता है ना कि हाँ मैंने ये यूज़ कर लिया, मेरे को और अपग्रेड करना है, अपग्रेड करते करते you reach a point. Now but things are getting expensive, right? And like other day I was watching this new video where they launched a new camera, and then it's extremely sharp and it's amazing and everything is very good, and it's shooting non-stop, you 30 fps, everything is doing good, right? But now all the photographers are not even wanting to shoot for what you call proper focus shot. They just want that flash, and then everybody wants to haze it out, and we are shooting blurry images. So why are these companies even making what they are making, right? It's a gameplay, right? Like we as photographers, we want to shoot like retro style, because like we were already talking, you were talking about how you want to shoot on flash, right? And then you also want to do the same thing, everybody. So we all are shifting because we are looking for new ideas, kitna sharpness, kitna ye, because I have realized that my camera is very good. I'm using Sony Alpha 1. It's one of the finest cameras, does 4K, does what you call 120 fps on 4K, does 50 megapixel 30 fps, which I don't use at all, but it's very good. End of the day, your content is going on Instagram, and that actually reduces the quality. Yeah, that's why the only reason I print my pictures is because I want to see my quality. Yeah. So I print my pictures left, right, center. I have a printer staying at my home. I'm printing it all the time. I'm telling you, I put all my heart and soul in photography. Yeah. कुछ पैसे बचते नहीं है जेब में, एंड पूरा पैसा यहीं पे चला जाता है मेरा. I think, But provided, so I'm just clarifying that one thing is कि क्या बोलते हैं, अब ये जो अब ये जो गेम जो है, now what I've started doing is I've started using a filter. It's a Pro Mist filter. So it makes things very softer because I don't like it to be that sharp. Yeah. In my pictures or my videos, it's very मजा आता है. It's very sharp. So अच्छा, तुम्हारे पास है ना, तो मैं next time. अरे मिलता है यार, बहुत मिलता है. नहीं मिलता. बना ले तो बना. देखो मैं DIY बताता हूँ तुमको. What you do is वैसलीन लगा के. अरे वैसलीन ले ले, तो स्प्रे पेंट ले ले, ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट ले ले, और एक UV फिल्टर ले ले, हल्का सा स्प्रे कर दे, एंडी फिल्टर, सॉरी प्रोमिस फिल्टर, यू आर गुड टू गो. हम तो वो उसमें दा विंची में जाके मस्त वो ग्लो वो डाल के हम लोग करते हैं. नहीं जरूरत नहीं, मैं तेरे को सिखाता हूँ, ये सीखना एकदम बस एकदम बढ़िया चीज़ है, बड़ा मजा आता है. गाइस, न्यू वीडियोस कमिंग आउट, DIY हाउ टू मेक प्रोमिस फिल्टर बाय श्रेयस दुंगरवाल. अरे बहुत आसान है, बता तो दिया. हाँ उस दिन बनाया तो था हमने. लिंक इज हियर. नहीं हमने वीडियो नहीं बनाया, पर हमारे पास वो पड़ा है. देख बहुत आसान है, एक फिल्टर लेने का एंड UV फिल्टर लेने का, स्प्रे पेंट मारने का हल्का से एकदम दूर से, बस यू गुड टू गो. बट एनीवेज, दिस वाज व्हाट द होल थिंग इज, एंड आई होप तेरे को मज़ा आया आज मेरे साथ. भाई तो मज़ा आया भाई. हाँ बट ठीक है, अभी चाय नहीं मिली है. अभी मिलेगी, इसके बाद चाय मिलेगी. अब फिर से चाय पे बैठते हैं. बट लेट्स एंड दिस बिकॉज अपने को आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बात करते करते. इतना वीडियो बनेगा, इतना हो गया, कुछ ज़्यादा ही. क्या बात कर रहे हो, सारा दिखाई नहीं हमको. थैंक यू सो मच यार प्रीत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू मैन. मोस्ट वेलकम. बहुत मजा आया दैट वी रिकॉर्डेड दिस थिंग. आई मीन गाइस, वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग ऑन दिस सेशन, बट थैंक you so much, Deep, for coming along and doing this with me. Loved it. Thank you, man. I'm always so there are very less people know about me that in the back days I used to see Shreyan's picture and I used to think that one day I'll shoot like this, the way how he's shooting with RGB lights. I was like he's the one. I want to shoot like him. So we met one day and he teach me some editing thing, retouching, which I never tried in my life. But yeah, he's always dear to me. We always speak about creative thing rather than abhi jo kiya hai. But yeah, I always appreciate him, admire his work, and if someone asks me who's a good photographer, I always say like, just go and check Shreyans Dungarwal, bro. You'll be surprised. And yeah, for me, he's the one whom everyone should follow, because the way he shoot, he puts his heart and soul, and that his picture speaks. Basically, that's what photographer or photos talk about. So yeah, he is. So I'm glad you invited me. थोड़ा कुछ जो मुझे पता है मैं कुछ शेयर कर पाया, and
थोड़ा बहुत आपने कुछ शेयर किया. It's very exchanging of Yeah, see, thing. this was all for that because I always wanted to. Matlab, I just feel that photographers should be given that what you call importance, which is not been given in India at this point. I mean, काफी लोगों को है, but not for everybody. Yeah, I mean, And I feel if when we can do these kind of sessions, people can hear us out, and we're just talking random things, like. But it's still, these are very important things what people should actually look into. Okay. Actually, मालूम तो रहना कि when there's a photographer who's actually in your life, you're very lucky to have these photographers. At least क्या लोग शक्ल तो पहचाने, next time कहीं मिल जाए. जाने तो लोग ऐसा जो ignore मारते हैं, अरे कौन है, भगाओ इसको. अब हम photographers भी ready होके आएंगे, उनका भी style file shoot होने वाला है. मैं तो ऐसे आज ब्रांडिंग कर रहे हैं आज, वो इनका वार्डरोब में क्रेडिट तो दे दो भैया अपने, जिसको भी देना दे दो भाई, इतना बंठन किया है तो बता दो. भाई कुछ नहीं. This is a jacket she cheated. They sent me as a token for me. Okay. बाकी तो H&M है भाई, सस्ता. सुंदर टिकाऊ. सस्ता. खुद ही कर लेता हूँ स्टाइलिंग. जो मन चाहा वो पहन के निकल गया. But it end up looking nice, and I think this is how I am. Very nice. And this is how him. भाई देखो मतलब बाल कटवा दिए हैं. उनके लंबे बाल देख के मैंने सोचा था कि लंबे बाल करूँगा, हालांकि वो हो नहीं पाए. But yeah, look at him. मतलब भाई मतलब the way he is carrying himself is really nice. I learned one thing from him. Whenever you go for any shoot or anything, make sure you wear good shoes. No matter it's a branded or non-branded, it should look good. It should suit your personality. So if you want more inspiration, follow this guy. Whoa. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much, bhai. Thank you so much, man. यार बहुत मजा आया ये बात करके. It was very interesting, and I'm so glad that you came on board. It was the first podcast today, and अच्छा लगा. This will be a good release for us. फिर से वो वीडियो चल रहा है. Dimple in the house. Oh, then thank you so much, man. Chal. See you, man. Okay, cut.